अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द कोरोनेशन। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। बहुत से लोग शायद ये कहेंगे भाई हम क्यों इसमें इतना इंटरेस्टेड है। हम दुनिया में इंटरेस्टेड हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और तो पाकिस्तानी शुरू से रॉयल फैमिली में इंटरेस्टेड है, मतलब माने या ना माने आप। प्रिंसेस डायना की शादी से लेकर उनके फ्यूनरल तक दुनिया टेलीविजन हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इवेंट्स में। तो जी, बरतानिया के बादशाह, अब बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी की तकरीब जो है वो कल होगी। तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। रस्म ताजपोशी लेके आएंगे, मतलब रस्म ताजपोशी। अच्छा, तो जी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। बादशाह चार्ल्स के एशाया और दौलत मुश्तरका अच्छा, अब ये भी दौलत मुश्तरका की मीटिंग्स में शिरकत होंगी। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और अहम शख्सियात की लंदन आमद का सिलसिला जारी है। आपको पता है मेले का पैलेस के बाहर तो ऐसा मेला। अच्छा, ये जो क्राउन है हुमा, ये है जी सेंट एडवर्ड्स क्राउन। ये झूठा है। हाँ, ये झूठा है। ये जो जिसका ये मॉन्यूमेंट से बना हुआ है, रेप्लिका से बना हुआ है, जो सड़क पे रखा हुआ है, ये एक्चुअल क्राउन होता है जिससे बादशाह को क्राउन किया जाता है। और ये सेंट एडवर्ड्स, ये इंपीरियल स्टेट क्राउन है जिसमें वो प्रिंसेस रेड रूबी है ना, ये अंदर ही फिर क्राउन चेंज होता है। एंड देन व्हेन द किंग और द क्वीन, पहले तो क्वीन एलिजाबेथ थी जब उनकी 53 में कोरोनेशन हुई थी, कम्स आउट तो उन्होंने इंपीरियल स्टेट क्राउन पहना होता है। लेकिन वो जो एक्चुअली कोरोनेशन होती है वो सेंट एडवर्ड्स क्राउन से होती है। अच्छा, ये मुझे पसंद है विद द पर्पल वेलवेट, ये वाला, मतलब इट्स वेरी प्रिटी आल्सो। ये दिखाया था। तो जी कल हमारी मुलाकात हुई डेप्यूटी ब्रिटिश हाई कमिश्नर सारा मूनी से। बहुत हमने बातें की, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। It is going to be a historic event in the British history, certainly, and the world is going to witness it again. And we have a very special guest to discuss it with. Deputy British High Commissioner Sarah Mooney is with us in the studios. Sarah, good to have you in the studios. Thank you. All right, we get to see the grandeur and the symbolic thing of it on television mostly, and a lot of people here in Pakistan are very interested and invested in it as well. So, but we would certainly like you to explain the significance of this event particularly. This is a really significant event in British history. Certainly, quite probably the only coronation I will witness in my lifetime. So what will happen is the King will be anointed and crowned at Westminster Abbey on Saturday morning. The event itself is based deeply rooted in history. Westminster Abbey has hosted coronations now for 900 years. Wow. And parts of the ceremony are actually much older than that itself. Although it has this pageantry, this splendour around it, it's also part of modern Britain. And so this year, uniquely, this time, there will be an interfaith element to the service. So there will be representation from the great faiths of the UK, Judaism, Hinduism, Islam will be present there in Westminster Abbey to witness the coronation. It is a deeply symbolic event for the people of Britain. This is the first time that this particular interfaith element has been added for this coronation. And obviously it's happening after 70 years. So for a lot of the world has people, changed. I think this would be a first one as well. Is there a rehearsal for this? Because this is such a grand affair. It's going to be shown all over the world, and people, as you know, they are interested in the royal family anyway. So everybody wants to see what's going on. Is it pre-planned? There's a rehearsal. Everything has been done that way. So there has been a rehearsal, and I'm sure that outside the sort of big dress rehearsal, there's been a number of practice events. So yes, there's a lot of planning that goes into it. And is it open to the British public? Because whenever there is some big event we see on TV, you know, the people really come out in hordes and they line up the streets, and there's a drive as well over there with the king or the queen inside. And a gold carriage. So there's all the carriages. A very fairy tale kind It is a very fairy tale look. And the ride from the palace to Westminster Abbey is through the mall, and already people from across Britain and across the Commonwealth and the world are camping along the mall under the great flags of the Commonwealth, waiting to cheer the King and Queen Camilla as they drive through to the Abbey and then come back. So the people of the world are welcome there. At the Abbey itself, it's
just invited guests. I mean, including, of course, the Prime Minister of Pakistan. Our Prime Minister Shehbaz Sharif is already there as well for this very occasion. As much as we love the grandeur associated with it, and we know that how symbolic it is going to be, but there are some practical elements to it as well. So, and we certainly, Pakistan, countries like, you know, Commonwealth countries, would you like to elaborate how important has this year been for Commonwealth countries, and what would be probably the King's plans for us? So, as agreed by the Commonwealth heads of governments, the King inherited the title of Head of the Commonwealth on the death of Her late Majesty the Queen. He is deeply, deeply invested in the Commonwealth itself, and the Commonwealth will feature as a prominent element of the service at Westminster Abbey, but also in terms of the Commonwealth, what it means, this group, free association of 56 nations, which are brought together by shared values and interest in democracy, freedom, sovereignty, the advancements of global freedom. This is really important to him. And I think what he sees as vitally important, both in his coronation but also in the coming year, is the Commonwealth and youth. And very much this is the Commonwealth Year of Youth. And he and the late Queen were very much looking at ways that they could support this. How would you, what are the plans to make it relevant for the youth? Why would anybody in the youth, for instance, let's say in Pakistan, would be interested in Commonwealth anymore? I think there's some really quite practical answers to that, and fundamentally the Commonwealth is a huge economic powerhouse and has even more potential. So Commonwealth leaders, for example, have committed to lifting inter-Commonwealth trade from its current value of $750 billion to $2 trillion by 2030. And if we can engage Commonwealth youth in that growth, if we can engage them in that free trade, if we can engage their interest in freedom, sovereignty and security, this is a great benefit. And particularly, I think, when you look at the size of youth in the Commonwealth is what? 2.6 billion people, of which 1.5 billion are under the age of 30. There are a lot of things that we are looking forward to, certainly, and we are certainly more interested in the grandeur. Sitting here, obviously, we are going to be watching it on TV. And the aesthetic elements of it, to be precise. And just also the know that the two crowns would be used for the Majesty, King Charles III, but people are really interested. What crown would Queen Camilla be wearing, and what other members of the royal family be wearing? The interest that we were talking about, Sarah, here you go. So now would they be wearing tiaras or the crowns, and the questions of the list of questions is long. So, you know, this is the first time we all are witnessing a coronation in our lives. Yeah, that's right. Great to have you. Thank you so much, Sarah, for being here. And we are going to be, I think the rest of the country and the world is going to be watching the coronation on TV. The rest of the world is going to be watching, और माने या ना माने जहाँ जहाँ होगा एक क्यूरियोसिटी होती है, एक अलिफ लैला की कहानी समझ के इंसान, क्योंकि रॉयल फैमिलीज अब हैं दुनिया में, लेके कितनी रहेगी, और इतनी फ्लैम्बॉयेंट और पॉम्प के साथ जो उनके त्यौहार होते हैं, और ये जिस तरह कॉरोनेशन है, और ये तो वो मौका है फॉर इवन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ही देख लें, क्योंकि ये दोबारा इतनी जल्दी होने नहीं वाला, बहुत अरसे बाद हो रहा है, तो इसलिए इंटरेस्ट है। ब्रिटिश मीडिया आपको पता ही है, वो तो हर चीज़ पे किस्से कहानियाँ बनाते हैं इन मामलात पर्टिकुलरली। सो एक तवील बहस बड़े दिन से चल रही है कि क्या क्वीन कॉन्सोर्ट कमिला जो ताज पहनेगी, क्या वो कोहिनूर वाला ताज होगा या उसमें कोहिनूर लगा होगा या नहीं लगा होगा? कॉन्सर्ट है, मतलब इन द सेंस कि वो वो क्वीन एलिजाबेथ वाला उनका वो रुतबा नहीं है, क्योंकि किंग इज द मेन। बट क्वीन एलिजाबेथ ने भी, आपको पता है, कोहिनूर का भी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, क्यों? आपको पता है क्वीन मदर के ताज में ज़रूर वो था, क्योंकि उसके बाद से उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत से ममालिक, और उसको थोड़ा सा बैड ओमन भी, मैंने कहीं पढ़ा था, बैड ओमन भी कहा जाता है, और उसको तमाम अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, तमाम ही ममालिक उसकी ओनरशिप का दावा करते हैं, तो इसलिए उसको डिप्लोमेटिक बॉम्ब के तौर पर भी जाना जाता है इन दीज ज्वेलरी टर्म्स।
क्योंकि आए दिन आपको पता है ना, अभी रिसेंटली भी तो किसी ने अपना हीरा वापस मांग लिया। वो कौन सा मुल्क है जिन्होंने अपना हीरा वापस मांगने की? साउथ अफ्रीका को भी 16 घंटे पहले याद आया। 16 घंटे पहले ही, क्योंकि जो कॉलोनियल डायमंड्स हैं, व्हिच आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड्स, जो बेसिकली रेगेलिया जो हाथ में सोटा जिसे हम दिखा रहे थे ना, ये वाली, इसमें ये ऑलमोस्ट 530 कैरेट से ज़्यादा का ये डायमंड है, कॉलोनियल डायमंड, जो इसमें जड़ा हुआ है। और इसका कुछ हिस्सा जो है, ये 3 पीसेस बड़े जो पीसेस हैं उसमें फिर इंपीरियल स्टेट क्राउन में भी है। सो ये साउथ अफ्रीका ने भी अचानक से उन्हें याद आया। बेसिकली ये साउथ अफ्रीकन डायमंड्स हैं। हाँ, तो उनको याद आ गया ना कि हमारा 600 मिलियन साल पुराने ये का डायमंड। हाँ, तब ये इनकी फॉर्मेशन हुई थी। साइजेस देखें जरा, मतलब कि फुटबॉल के साइज के तो ये न चले, नॉट लिटरली फुटबॉल, मजाक कर रही हूँ, लेकिन मतलब ये बहुत बड़े बड़े डायमंड हैं। इतने बड़े हैं कि इनको काट के जब एक डायमंड से 3-4 भी बनाए गए तो वो भी बड़े बड़े हैं। 530 कैरेट आप अंदाजा लगाएं ना, मतलब 15 कैरेट ही अगर हो तो इतना होता है, तो 530 कैरेट तो क्या ही होगा। खैर बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसमें बात हो रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, उस दोनों तरफ लोग मौजूद होंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर तमाम कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका के मुबालिक के झंडे लगे होंगे और उसमें से कैरेट जो है वो गुजरेगी। आपको पता है कि आते हुए एक डिफरेंट कैरेज इस्तेमाल होगी, फिर कॉरोनेशन के बाद जाते हुए एक डिफरेंट कैरेज इस्तेमाल होगी। सो आते हुए जो कैरेज होगी उसके पहिए वगैरह तो आपको गोल्डन नजर आएंगे, तो लेकिन जो कैरेज पार्ट है इट इज़ ब्लैक इन कलर, उसे कहते हैं डायमंड जुबली स्टेट कैरेज। और वापस जाते हुए क्योंकि द किंग वुड बी क्राउन्ड, तो वो जो उनकी गोल्ड स्टेट कैरेज है वो इस्तेमाल होगी, जो एक्चुअली खालिस सोने से तैयार की है, 260 साल पुरानी ऑलमोस्ट। इंटरेस्टिंग होगा, मतलब यू नो वीकेंड भी है, टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा, बाकी दुनिया भी देख रही होगी, तो इट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच। और प्रिंस हैरी भी बाय द वे आ रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी नहीं आ रही। बीवी गालिबन उनकी नहीं आ रही हैं, तमाम निगाहें उन पे भी हैं, लेकिन शायद वो जो पोस्ट कॉरोनेशन सेलिब्रेशन है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सो वो सिर्फ इस तकरीब के लिए वेस्टमिंस्टर एबी में मौजूद होंगे और उसके बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो दिस शुड मेक यू फील इजी जी। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं और मसले होते हैं, और रॉयल फैमिली में भी मसले चल रहे हैं, तो लिहाजा लेट्स सी के कौन अटेंड करेगा कौन नहीं करेगा, बट दीज आर द डिटेल्स। और कॉरोनेशन होगी कल। बरतानवी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होगा सारा सिलसिला।